And just to let you know that I'm also actually post pre-marriage, I was also a Goenka. And our roots are also in Akola itself. So for many years, so for many years, my parents were in Akola. So that's the yes, definitely. Yes. So, Board of Industry and Academia partnership in association with yeah. So, am I audible? Am I audible? Yeah. So, Board of Industry and Academia partnership along with Risha Foundation and Bombay Stock Exchange Investors Protection Fund bring to you how we understand Indian securities market, create wealth. Basically, today's program is basically an investor awareness program. So the flow of the presentation would be introduction to SEBI and securities market, primary market versus the secondary market. What is the key differentiation? What are primary markets? What are the different types of public issues? Prerequisites for investing in securities market. What do you mean by what are the different accounts that you must be opening to start investing? What are the due diligence of investing, how to apply in public issues, what are the rights of the shareholders, what are the recent investor protection measures, what are the do's and don'ts of investing, scores, and the SEBI help desk. We'll try and cover a little bit of stock exchange as well. We'll see how much time we have. Accordingly, we can look at it. Okay. When we talk about wealth creation, when we talk about securities market, when we talk about any such thing, what is the first thing that we're thinking of? We're thinking about creating wealth. So when we are thinking about creating wealth, what is it that comes to our mind? Oh, how did this person become rich, or how did that person become rich? So if I have to tell you about the richest people in the world, okay, so right now this is a little bit old list. We have a little bit change in the list. We have now Gautam Adani at number 3. We have Mukesh Ambani at number 9. We have Elon Musk at number 2. We have the Bernard family at number 1. So there is a little bit difference, but no matter what the difference is, these are the richest people in the world. Okay, and what do you think makes them the richest people? So what does it take? It takes a lot of survey. It takes a lot of intelligence. Okay. So yeah, working hard is one thing, but you have to also work smart. So when I say smart, I need to understand what? I need to understand the EIC analysis. Okay. What do I mean by EIC analysis? I mean economy, industry, and company analysis. So what do I mean by that? So how do these people really start making money? Okay. They say that they start owning shares into a company which is doing well. Okay. They start owning shares into a company which is doing well. So what are shares actually? When I say shares, what do I mean by shares? So say, example, I have a chessboard. Okay. And chessboard has 64 squares. Now, if I say every 64, every square is a share, I will say I have 64 shares, right? Every time I buy one square, I will say that yes, some part of that chessboard is mine. Okay. I will start becoming the co-owner of that chessboard, right? The moment I have 32 squares or more than 32 squares, I become 50% or more than 50% owner into the shares of that business. And as a result of which, what will happen is that I will become the entire, I will say that I am the owner of this business. Now, when I believe in a business, how do I believe in a business? So first I have to do the EIC analysis, as I just mentioned to you, economy, industry, company analysis. Now, when I talk about economy, what does it comprise of?
what is happening all around us, what is happening globally. So today, what is happening globally? Today, we are seeing that there is so much of artificial intelligence, growth of artificial intelligence, right? We have now every day, you would have heard, I'm sure all of you all have heard about the chat GPT, Microsoft investing in the chat GPT, right? We have heard about the Cold War between Ukraine and Russia. We have heard about the impending health problems, or the impending problems, that we are facing in terms of health issues of the people. Okay, we are hearing the economy of Europe, or in particular UK, falling. Okay, so are we really disassociated with all this news? No, we are not. Okay, every news that comes in the economy, we are all globally connected. So every news in the economy affects us. So when we are saying that yes, there is a cold war between Russia and Ukraine, we are affecting a petroleum industry. When we are saying that yes, there is a impending problem, or there are side effects of COVID-19, and there are variants which are going to be coming, we are affecting the pharmacy sector. We are looking at more resilient drugs coming in, more patents of new drugs coming in. All right, so all this affects the economy. When I study the economy, I understand that which industry is it which is likely to grow. So today we are looking at a lot of development in terms of infrastructure. We have a lot of highways coming up. We have a lot of metros and monorails and all coming up globally in India. Okay, so I know that yeah, infrastructure is growing. I know pharmaceutical sector is growing. I know oil industry is growing. I know certain industries are growing. So what is it prudent for me? Is it prudent for me to invest into, to start a company like that on my own? Or is it prudent for me to start investing in such a company? So for starters, it is very difficult for us to start investing into, it is very difficult for us to actually start our own company. Okay, so say for example, I want to start my own oil refinery. I need a license, I need experience, I need my own a lot of capital investment, right? So there is a lot to start a company. So for starters, we can start buying shares into the company, into the industry that we believe in. Okay, once we have understood that what industry we are believing in, then we can start investing into the shares of companies in that industry. Now, how do I identify these companies? ठीक है, मैंने सोच लिया कि मेरे को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, मैंने ये सोच लिया. A pharmaceutical sector is going to grow is what I am thinking at the moment. तो अगर मैंने ये सोचा है, then what are the criteria for me to select the company? तो मैं क्या सोचूंगी? I will see कि ये कंपनी में प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं. Is the liquidity of this company good or not? वो अपने डेट्स पे कर पा रही है या नहीं. Okay, what has been the sales? Okay, past sales क्या है? What has been the history? Okay, what has been the management उसका stable है या नहीं है, उसका reputation अच्छा है कि नहीं है, is the company giving good dividends or not? All right, so I will see all of that when I am investing into the company. So how do I, once I understand that how do I invest, I will have to understand that how do I invest into these shares. So for that, we have basically two markets. We have the primary market and the secondary market. Now, what do I do? If I directly enter into the primary market, I directly enter into the capital market. Okay. So, in what way can I enter into a primary market? I can enter through various ways, and the various ways are through various issues. So, if I see this, okay, I have something called as the IPO and something called as the FPO. Okay. What do I mean by IPO? IPO is initial public offering. अभी बहुत सारे आईपीओज आ रखे हैं. ओके, सो यू वुड हैव, जैसे अभी अडानी का आया है, वीएलसीसी का है, तो आपको वो दिखेगा कि हाँ इट इज 300 शेयर्स और 3000 शेयर्स प्लस ओएफएस. व्हाट डू यू मीन बाय ओएफएस? ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, दे ऑफर देयर ओन शेयर्स फॉर सेल टू द पब्लिक, whereas the remaining part, the company offers its shares to the public for the first time into the market. तो कंपनी को पैसे रेज करने हैं, इट कैन रेज इट थ्रू इक्विटी बाय सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक
through an IPO. जब नेक्स्ट टाइम वो कंपनी को और पैसे उठाने हैं पब्लिक से, then in that case the company can again come out with another offer, and that is called as FPO, that is called follow up public offering. Okay, so IPO and FPO are basically fresh issues by the company directly to the public, either through a fresh issue or through offer for sale. Offer for sale, as I told you, is promoters capital is offered for sale to the public. Okay, besides that you also have right issue. What do I mean by right issue? Right issue is basically जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वही शेयर होल्डर्स हैं उनको वो राइट मिल जाता है कि दे आर अलाउड टू बाय शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. Okay, that means, what do I mean by that? In the case of right issue, only the existing shareholders get an offer to buy the shares. So if at all they do not want to really exercise that right, then they can sell their rights to another person. Okay, and what happens in the case of bonus issues? Bonus issues mein these shares are given free of cost to the existing shareholders in the proportion of their holding. Okay, so this is public issue, right issue, bonus issue. And then you have private placement. Matlab they are privately placed to only certain set of people. All right, either through QIPs. QIPs are qualified institutional placements. जैसे आपका LIC हो गया, UTI हो गया, खाली आप उनको दे रहे हैं और वो लोग बल्क में शेयर्स आपके बाय कर रहे हैं. Okay, or you could have preferential issues, that is the issue of preference shares. So these are the various ways in which you can do issue in the primary market. Besides primary market, you also have, say अभी कोई IPO नहीं आया पर मुझे वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है. Is it possible? Yes, it is possible, and this is possible through the secondary market. Okay, this is possible through the secondary market. So secondary market is also called as a post-issue market. Okay, it is also called as a post-issue market, which means that अगर जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उसकी जब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज थ्रू अ सेकेंडरी सोर्स एंड दैट इज थ्रू एन एक्सचेंज. तो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं. वी हैव अबाउट 9 exchanges in India, but the main 2 exchanges are, anybody can share over the chat which are the main 2 exchanges of India. It is the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. These are the main 2 exchanges of India. Okay, and because these exchanges are there, it is possible for us to even trade in securities which are already issued. Okay, तो उनके prices कैसे होते हैं? Through the demand and supply position. तो अगर आपने कोई, say for example, आपने कंपनी ए को लिस्ट डाउन किया कि ये कंपनी ए में मुझे इन्वेस्ट करना है, देन हाउ डू आई नो दैट इसकी प्राइस क्या है? सो यू हैव टू लुक एट द एक्सचेंज में आज के दिन या अभी के मोमेंट में उसकी प्राइस क्या चल रही है. व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, एंड हाउ इज द करंट मार्केट प्राइस डिसाइडेड? थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. से आपको 100 शेयर बाय करने हैं, किसी और को भी 100 शेयर बाय करने हैं, किसी और को 500 शेयर बाय करने हैं. तो इन दैट केस क्या होता है, वो शेयर की डिमांड बढ़ रही है. ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्राइस ऑफ दैट शेयर विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. अगर आप वो शेयर को सेल कर रहे हो, किसी और कोई और भी सेल कर रहा है, मतलब उसकी सप्लाई बढ़ रही है. ओके, देन इन दैट केस जब सप्लाई बढ़ जाती है तो वो प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगता है. So the demand and supply forces in the market decide the price of your security. Okay, and that is why we say that this is a post-issue market. And ये mainly, it is, the purpose is mainly you're trading into the securities. Okay, जैसे ही आप buy sell करते हो, आपको वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो आपके इन्वेस्टर्स की फुल लिक्विडिटी रहती है. So it gives you a lot of liquidity to the investors in the market. And अगर कंपनी को further capital raise करना है for any expansion, तो उसका मार्केट प्राइस के हिसाब से वो और कैपिटल रेज कर सकता है. तो वो कंपनी के लिए भी फायदेमंद है कि जितना उसकी कंपनी का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा उतना ही वो कंपनी आगे बढ़ सकती है. सो फॉर एवरीवन इन द कैपिटल मार्केट, सो दे से ना कि अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग होना है, कंपनी का कैपिटल मार्केट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग. ओके,
for the company to be strong, its capital markets have to be really strong. And that is why it is important for us to really understand these capital markets and contribute towards investing into it. Okay. So we here we have, in the case of primary markets, you have the it is a first time issue. It is a new issue market. Okay, the issuer will issue the shares. The price of the shares in the case of IPOs and FPOs will be determined by the merchant banker. ओके मतलब वो मर्चेंट बैंकर को कंपनी अप्रोच करेगी, वो उनका वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से उसका शेयर का प्राइस डिटरमाइन होएगा, and accordingly we will be able to determine the price of the share. And then the purpose of this particular IPO is to raise capital for expansion, for diversification, etc. Okay, so all this is required in the case of primary market. Now, कभी कभी क्या होता है कि आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर लेने जाओ तो क्या होता है कि आपका एक शेयर का प्राइस ही बहुत ज्यादा होता है. Okay, so say for example you want to buy one share of Infosys. Okay, तो अगर आपको वो ही 3,000 4,000 में आपको एक शेयर आएगा, then in that case वो आपको लगेगा कि मुझे तो 3-4 हजार ही इन्वेस्ट करना था, तो मेरे को तो एक ही शेयर आया. So what in that case, it is preferable that you invest in something called as mutual funds. Okay. What are mutual funds? Mutual funds may you pool in the money of various investors. Okay. Then you form like a pool of funds. These funds are then invested into different securities. Now, who invests them? They are invested by a fund manager who is a part of a AMC. AMC is an asset management company. Okay, this company then buys various shares. Now, what kind of shares will buy depending on the mutual fund that you're investing in. So there are various kinds of mutual funds. There are large cap funds, there are mid cap funds, there are small cap funds, there are balanced funds, there are sectorial funds, there are gold funds, there are debt funds. Okay, so बहुत सारे type के funds हैं. How do I decide which fund do I choose? So there are various criteria how to decide that which fund that you choose. अगर आपको आपका risk taking capacity ज़्यादा है, okay, then you invest in riskier funds. Okay, that means आपके म्यूचुअल फंड के सामने लिखा होगा कि उसका रिस्क लेवल क्या है. ओके, हाउ रिस्की द फंड इज. तो आपको उसका पास परफॉर्मेंस देखना है, उसके पास रिटर्न्स देखने हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कुड चूज. Okay, debt funds are comparatively safer क्योंकि they will invest in debt securities like debentures, company deposits, fixed deposits. यहाँ पर वो invest करती है. Whereas even large cap funds are comparatively safer क्योंकि वो कंपनी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं कैपिटल मार्केट में, पर उनका ग्रोथ स्लाइटली स्लोअर है. ओके, द ग्रोथ इज स्लाइटली स्लोअर. For investors who are ready to take more risk, okay, and for the investors who want a higher return, it is preferable to invest in mid cap and small cap funds because the growth levels are like this. But of course, the risk factors are also higher. Okay, so once you have decided which mutual fund you have to invest in, you can invest in two ways. You can invest in the lump sum method or through a systematic investment plan, SIP. Okay, so in lump sum, what happens? You have to invest an entire big amount once and for all into the mutual fund. फिर आपको एक after a year या 3 साल या 5 साल जब भी आप उसको redeem करोगे, उस हिसाब से you will get a return. Okay, now कितने साल में redeem करना है, that again depends on you. So you have something called as open-ended mutual funds and close-ended mutual funds. तो close-ended में वो लोग बताएंगे 3 साल का आपका ये फंड बंद हो जाएगा, या open-ended funds में वो चलता ही रहता है जब तक आप उसको redeem करो. ठीक है, तो जब तक आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं. पर अगर आप 1 साल के अंदर उसको रिडीम करते हो तो यू विल सफर समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसका टैक्स रेट ज्यादा हाई होता है. वेयर एज अगर आप उसको 1 साल के बाद करते हो तो यू विल ओनली हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसका टैक्स रेट बहुत कम होता है. ओके,
So you can also invest through SIP, that is systematic investment plan. Okay, systematic investment plan में आपको हर महीना थोड़ा 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 अमाउंट इन्वेस्ट करना है इनटू द कैपिटल मार्केट. ओके, सिर्फ एवरी टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट 5,000. नाउ वो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिलता है? यूनिट्स. ओके, व्हाट डू यू गेट? जो भी अपनी कंपनी ने, एएमसी ने शेयर्स बाय किए हैं, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल यूनिट्स. जो भी वो शेयर्स के भाव हैं उस हिसाब से आपका एनएवी मिलता है, नेट एसेट वैल्यू. ओके, वो करंट एनएवी के हिसाब से आपको हर महीना उतने यूनिट्स ऐड हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट लेवल. Okay, so mutual funds is also a safe way of investing into your capital markets. Of course, capital markets are subject to market risk. All right, but it is worth taking the risk because your returns are also equally good. Okay, now once we are investing, the first thing that comes to our mind is that are these markets regulated? Yes, the markets are regulated, and we should be very proud of ourselves that we have one of the most resilient markets. Okay, we have one of the most resilient markets in the sense that markets हमारे जो हमारी regulatory bodies हैं, जो RBI है, SEBI है, they are doing a fantastic job of regulating the markets. इसलिए जहां पूरे वर्ल्ड में जो रखा है, इंडिया इज क्वाइट रेजिलियंट. आज भी हमारे जॉब मार्केट्स खुले हैं, आज भी हमारी ट्रेडिंग्स खुली हैं, आज भी हम लोग ग्रोथ की तरफ बात कर रहे हैं. सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर दैट आवर रेगुलेटरी बॉडीज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Okay, so then who controls these markets? So as I told you, it is for the security markets, the capital markets are regulated by SEBI. Okay, that is, anyone knows the full form of SEBI can type it on the chat box. Okay, SEBI is Securities Exchange Board of India. Okay, so ये क्या करता है? SEBI works like a trimurti. Okay, what does it do? It develops the markets, it regulates the markets, and it also protects the market. Okay, so what does it do? कि वो कोई भी न्यू सिक्योरिटीज आती हैं वो उसका डिजाइनिंग करता है. So we have a lot of markets. Okay, we have a lot of segments into the capital markets. We have the cash segment, equity segment, derivative segment, commodity segment, currency segment. तो बहुत सारे types of segments हैं ये market में. So what does the SEBI do? It starts developing, इस markets को develop करता है, new products लेके आता है, which are more which are really these segments are the ones where it is easier for the customers to understand that the redemption of these securities are more transparent, they're easier. तो इस तरह से वो investor का protection, it protects investors and the interest and their interests. Besides, it also regulates the security markets and all the connected matters related to them. Okay, so as a result of which what happens is the efficiency and the transparency of the market is increased, and we have new products which are available in the market. So SEBI is therefore doing a great job of regulating the markets. Once you have known that my markets are regulated, you have to start investing. To invest, you need 3 accounts. Okay, again, you need 3 accounts. What are they? They are your bank account, your trading account, and your demat account. Okay, so बैंक अकाउंट तो सबको पता है क्या होता है. हम पैसा उसमें रखते हैं, हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसके लिए हम लोगों को केवाईसी करना पड़ता है. व्हाट इज केवाईसी? नो योर कस्टमर. ओके, तो उसमें केवाईसी के लिए क्या क्या चाहिए रहता है हम लोगों को? टू डू अ केवाईसी वी नीड अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अ पैन नंबर, अ प्रूफ ऑफ एड्रेस. ओके, कि आपको कहाँ पर आप रहते हो, आपका आधार कार्ड एंड ऑल दैट, एंड ऑल योर पैन कार्ड हैज टू बी लिंक्ड विथ योर Aadhaar. It's very, very important to link the PAN card with your Aadhaar. Once all these formalities are done, then you have to open a demat account. Demat account means dematerialization of account. What do you mean by demat? Demat means you are converting your physical securities into a
into a virtual one. Okay, so demat account basically holds all your securities in a manner which where you don't really have paper. Okay, you don't have any paper, but आपके अकाउंट में आपको दिखता है कि आपकी इतनी सिक्योरिटीज हैं, आपने ये डे पे लिया है, ये that is in your trading account. Now, where do I have to open this? Okay, the question is, where do I have to open? You have to open it with a DP, depository participant, okay, or or we say a registered dealer, okay. Registered dealer. How do I know the dealer is registered? उसका पूरा लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिलता है सेबी के. यू विल ऑल्सो गेट इट ऑन द एक्सचेंज का वेबसाइट, ऑल द एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड डीलर्स. सो जहां पे भी आप अकाउंट खुलवाते हो, okay, you could open your account in ICICI Securities, Kotak Securities, or Sher Khan, or Zerodha, or 5S. There's so many. Okay, there's so many. I am not advocating कि ये अच्छा है या ये नहीं अच्छा है. Everyone is good or bad. That due diligence you have to do. Okay, तो क्या डिसाइड करता है कि वो लोग कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? उन लोग प्रॉपरली आपको प्रॉपर रिटर्न में ब्रोकरेज बताते हैं या नहीं बताते हैं? आपका इंट्राडे का क्या ब्रोकरेज है? आपका डिलीवरी एक्सचेंज का क्या ब्रोकरेज है? हु चार्जेस यू लेस ब्रोकरेज? मार्जिन कितना दिया हुआ है? व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग? कि ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि जितना आपने पैसा रखा हुआ है अपनी ट्रेडिंग अकाउंट से, उससे कुछ ज्यादा आप वो बाय सेल कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू हैव टू नेट इट ऑफ बिफोर द एंड ऑफ द डे, बट वो आपको अलाउ करता है कि एक बार आप उससे ज्यादा ट्रेड कर सको. ओके, सो आपका मार्जिन अमाउंट कितना है? ऑल दैट यू हैव टू फाइंड आउट बिफोर यू चूज योर डीलर. Okay, and then you start investing into good companies which have good management, which are growing profits, and which have a healthy balance sheet. Okay, how do I decide that? I decide that by using my future projections. Okay, by using my future projections, by managing my track records, by calculating my financial ratios. Okay, what ratios will I calculate? I will calculate mainly the PE ratio and the PEG ratio. What is the PE ratio? PE ratio is the price earnings ratio. Okay, that means हमारा market price as compared to my earnings कितना है. Okay, that is my PE ratio. So the PE ratio will tell me that what is my price compared to my earnings. All right. Now अगर कंपनी का PE ratio बहुत high है, what does it tell you? It tells you that the company is doing well. उसकी डिमांड स्टॉक की बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा और नहीं बढ़ेगा. सो यू शुड अवॉइड कंपनीज विद अ वेरी 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 हाई पीई रेशियो. ऑलराइट, जिस कंपनी का पीई रेशियो बढ़ रहा है, इट्स ऑन द ग्रोथ. Okay, you should always target companies which are growth companies. Okay, which are doing extremely well in terms of their growth. तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे. You have to see their various financial ratios. You have to see their debt equity ratio. You have to see their current ratio. Okay, you have to see the various ratios to understand कि उसकी liquidity, net profit ratio, EBITDA क्या है. All that you have to see to understand कि उनके projections कहाँ जा रहे हैं. Okay, now is it risky to do this all on your own? The question is that yes, we have to do a lot of due diligence. हम लोग ऐसे ही किसी भी कंपनी में जीरो इन नहीं कर सकते हैं. We have to do in a lot of due diligence. तो अगर आप कोई भी कंपनी में ऐसे ही डाल दोगे, तो it is like driving a car and then falling into a pit. Okay, तो वैसा नहीं होना चाहिए. So what do I have to do? I have to become a very proactive investor. ओके, आपको पूरे कंपनी का फाइंड आउट करना चाहिए. वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स रीड करने चाहिए, उनका पास परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि हर साल उनका ग्रोथ हो रहा है या नहीं, उनके अभी के नए इन्वेस्टमेंट्स या नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं. ऑल दैट विल डिसाइड वेदर द कंपनी दैट आई एम लुकिंग एट इज गुड और नॉट. अगर ये आपसे नहीं होता है, यू कैन ऑलवेज टेक अ प्रोफेशनल हेल्प.
Okay, so who are these professionals? These professionals are mainly your stockbrokers, your mutual fund distributors, your registered investment advisors. These are the people you can ask for help, who will give you various information about the company, but the final decision should always be yours after taking due diligence. Okay. Now, how do I invest into these companies when I am doing when I'm applying to a public issue? तो पहले क्या होता था, हम लोग एक फॉर्म साइन करके देते थे, वो फॉर्म जाता था कंपनी के पास, वो साइन होता था, एंड देन आफ्टर दैट यूज्ड टू गिव इट टू द ब्रोकर, वो ब्रोकर कंपनी में सबमिट करता था एस्क्रो अकाउंट में, एंड देन वो एस्क्रो अकाउंट्स के बाद हम लोग को अलॉटमेंट होते थे शेयर्स के, और बाकी का पैसा बाद में आता था. Now, what was happening in this whole process is that I was losing interest. So, for example, अगर मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है और मेरा खाली 20,000 रुपए का अलॉटमेंट होता है, तो 80,000 का मेरा इंटरेस्ट वो पीरियड में लॉस होता था. So now we have come up with something called as ASBA. Okay, what is ASBA? Application supported by blocked amount. Okay, application supported by blocked amount में क्या होता है कि it is only for retail investors up to a rupees of 2 lakhs and it is supported by UPI. ओके, सो अगर अभी आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, आप खाली बैंक में एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपको ये ब्लॉक कर दो, आजबा के थ्रू मुझे एप्लीकेशन करना है, तो आपका 1 लाख रुपया ब्लॉक हो जाएगा, वो अकाउंट में आपके रहेगा, इट विल स्टिल गेट इंटरेस्ट बट इट विल ओनली बी ब्लॉक्ड, आप उसको खाली विड्रॉ नहीं कर सकते. द मोमेंट वो अलॉटमेंट हो जाते हैं शेयर्स के, आपका 20,000 का अलॉटमेंट हो गया, बाकी 80,000 आपके रिलीज हो गए फॉर यूज. ओके, सो इमीडिएटली दैट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड पोस्ट योर अलॉटमेंट. ओके, सो इट इज सो इजी नाउ टू इन्वेस्ट वाया आजबा. इसके अलावा आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो इन्वेस्ट. यू कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट, you can fill in an application with the investor, you can go to the company website and do your application. Once you have the shares, you become a shareholder of that company. मैंने starting में ही बताया था कि what do I mean by a shareholder. Okay, so shareholder is a part owner of the company and उसके पास बहुत सारे rights होते हैं. उसके एनुअल रिपोर्ट्स लेने के राइट्स होते हैं. जब मैंने आपको बताया उसके बैलेंस शीट स्टडी करो, कहाँ से मिलेंगे? उनके वेबसाइट से. और वेबसाइट्स में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करना कंपल्सरी है. यू कैन ऑल्सो अटेंड अ जनरल मीटिंग, आस्क देम क्वेश्चंस, आस्क देम अबाउट ट्रांसफर ऑफ योर राइट्स, ऑफ योर सिक्योरिटीज, ऑफ योर शेयर्स, आस्क देम व्हाट आर द की गवर्नेंस रिपोर्ट्स दैट आर देयर, रेजोल्यूशंस प्रॉपर कैसे पास हुए हैं, कौन अपॉइंट हुआ है, क्यों कोई निकाला गया है, ऑल दोस क्वेश्चंस दे हैव टू आंसर. एंड इफ एट ऑल वो लोग बोले कि भाई चुप रहो, आपको बोलने का हक नहीं है, नो, यू हैव द राइट. एंड इफ यू आर अग्रीव्ड इन्वेस्टर, you can complain against the company through scores. What is scores? We will just see in a couple of minutes. Okay. So SEBI has introduced various things to make sure that the investors are protected. तो I just told you कि अभी है ना KYC कंपल्सरी, तो अब वो लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है कि वेट करो कि हम लोग का ये पेपर दो, वो पेपर दो. अब there is something called as e-KYC. तो इमीडिएटली आपका जो भी डिटेल्स है वो इमीडिएटली अपडेट हो जाता है, आपका एड्रेस चेंज हुआ है वो अपडेट हो जाता है. सो आपके e-KYC पे आप अपना अपडेशन कर सकते हो. Besides that, there is something called as power of attorney. Now remember guys, this is not a compulsory document. I repeat, it is not a compulsory document. ये आप तब अवेल करो जब आपको इंटरनेट फैसिलिटी आपको लेनी है, ट्रेडर के साथ आपको ट्रेडर के थ्रू आपको करना है. अगर आप डायरेक्टली कंपनी थ्रू करते हो, डायरेक्टली ऐप थ्रू करते हो, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं है. Okay, you can directly go on the portal and do the trading through your broker. But if at all you want your broker to trade on your behalf, आप खाली उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप मेरे लिए 20 शेयर्स ले लो, 30 शेयर्स ले लो, 40 शेयर्स ले लो, then you have to give something called as the power of attorney. Even if you are giving the power of attorney, then in that case also क्या होता है, even if you are giving the power of attorney, then what has to be done?
then in that case also you will have to आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टाइम पे मिल रहे हैं. नाउ व्हाट्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? कॉन्ट्रैक्ट नोट इज बेसिकली लाइक अ रिसीट कि आपने इतना ट्रेडिंग किया है, इतने शेयर्स बाय किए हैं, इतने शेयर्स सेल किए हैं, तो वो एक रिसीट होता है विच यू हैव टू गेट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एवर यू हैव ट्रेडेड इन द शेयर्स. तो वो आप हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा आपको वो मिले. एंड कीप चेकिंग ऑल योर स्टेटमेंट्स एटलीस्ट क्वार्टरली. क्वार्टरली स्टेटमेंट्स चेक करो. अब तो ऐप में आपको रियल टाइम पे सब कुछ दिखता है. ओके, यू कैन सी इट ऑन द ऐप इटसेल्फ ऑन अ रियल टाइम बेसिस कि आपके कितने शेयर्स हैं, कौन से कंपनी के हैं, प्लेज हुए हैं या नहीं हुए हैं. All that you can see on a real time basis. Okay, so you can actually go through all of this on your app itself. तो आपको ये चीज का प्रॉब्लम ना हुआ है ना ऐसे कि वो प्लेज हुए हैं या नहीं. ओके, what do I mean by pledge? Pledge is acceptance of securities by way of pledge by the client. Okay, मतलब कि वो client की securities हम लोग for some time उसको pledge कर देते हैं so that वो पैसा उससे हम raise करते हैं. We buy in securities from the market and जब वो पैसे हम लोग वापस deposit करते हैं तो वो securities release हो जाती है. Okay, now again there are certain rules of pledging. आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे प्लेज नहीं कर सकता है. द ब्रोकर कैन नॉट pick up money on your behalf from the market, okay, and pledge your securities to it. So please be careful that the broker has not pledged your securities without your knowledge. Okay, so again pledging का framework has to be very clear. Okay, similarly आपका डीमैट अकाउंट के costs क्या हैं? Normally डीमैट आपका डीमैट अकाउंट comes free of cost for retail investors. खाली एक maintenance charges लगते हैं. But if at all there are some whatever are the basic charges, you should be aware about it, and you should make sure that all this is given to you in written by your DP. Okay. Besides that, you also have certain do's and don'ts of investing. Make sure अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग की है, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग, व्हाट इज, आई रिपीट, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग? मार्जिन ट्रेडिंग इज बेसिकली आपका जितना अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट से उससे ज्यादा आपने वो सिक्योरिटीज बाय कर ली है या सेल कर दी है. इन दैट केस जो पैसा आपका डेफिसिट है वो ब्रोकर ने एक बार भरा है, बट बिफोर द एंड ऑफ द डे यू मस्ट मेक श्योर दैट योर अकाउंट हैज you have actually paid in or received the funds in your account within the payout date itself. नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो अच्छी सिक्योरिटीज है एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट उसको बेच के वो पैसा रिकवर कर लेगा. Okay, so make sure that you are in sync with what is your total net payout for the day. Okay, be careful that you do not give any signed documents or any signed POA to your agent without your consent. Okay, your contract note is coming to you at least within 24 hours and you are getting your statements on time at least once in a quarter. In case of any dispute with your registered and transfer agent RTA or any delay in transfer of your securities, you can always approach the BSE redressal cell. Okay. Now, when I'm saying कि अगर आपका वो बेच के आपका जो भी पैसा आया, अगर वो पैसा आता है आपके ब्रोकिंग अकाउंट में, make sure you transfer it back into your bank account. बहुत ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में मत रखो, they can be misused. Okay, so make sure do not keep any excess money into your broking account. Okay, ensure that आपके, as I told you earlier also, कि आपकी securities आपका broker pledge नहीं कर रहा है. Make sure that it will be visible into your account. अगर वो pledge हुई है, keep a track of your account and make sure it is not pledged. Okay, हर delivery instruction slip को अगर आप delivery instruction slips in, now this is not a mandatory document anymore. अभी there are many ways to take delivery, but अगर आप अभी भी slip sign करके instructions देते हो अपने DP को, तो sign slips मत रखो अपने DP या broker के पास. Okay, verify your DMAT account and make sure that you get all your alerts on your registered email ID. Okay. Now, every now and then,
आप रेडियो पे भी सुनते होंगे, अमिताभ बच्चन जी भी बोलते रहते हैं कि है ना, आपके पैसे, अगर कोई आपको बहुत सारा पैसा परसेंटेज ऑफर कर रहा है या कोई कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने को बोल रहा है, डू नॉट जंप इनटू इट। ओके, डू नॉट गो फॉर एनी पॉन्जी स्कीम्स विच ऑफर यू कि आप ओवरनाइट रिच हो जाओगे, या आपको 25% रिटर्न आएगा या 100% रिटर्न आएगा। ऐसा कुछ भी कोई भी स्कीम में ब्लाइंडली एंटर नहीं करना है। डू नॉट फॉल ग्रीड टू ऑल दीज थिंग्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट आर द ब्रोकरेज, ये पे आउट कहाँ आएगा, कौन से स्कीम में है। ओके, डू नॉट गो फॉर एनी हॉट इन्वेस्टमेंट टिप, या किसी ने बोल दिया कि आप, कि पता है ये कंपनी का ये भाव बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। डू नॉट टेक इम्पल्सिव डिसीजंस। कोई भी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं विच विल गिव यू कि ये आपके एक्सपर्ट का ओपिनियन है, ये शेयर में डालो, वो शेयर में डालो। ठीक है, follow the advice. I'm not saying that don't listen to anybody, listen to everybody, but take your own decisions. आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये सब बेसिक क्राइटेरिया मालूम है। सो यू शुड टेक एटलीस्ट ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि ये कंपनी कैसी है। ओके, उसमें क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, एंड देन ओनली टेक द फाइनल decision. Don't be carried away by the advertisements. ओके, सो बहुत सारे अवेयरनेस आपको मैसेजेस आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते रहते हैं, एसएमएस आता है, टेलीग्राम आता है, व्हाट्सएप्स आते हैं कि ये आपके स्कीम्स हैं, ये वाला फ्रॉड फ्रॉड आ रहा है, ये फैला हुआ है। बिकॉज यू नो, कभी कभी एक आधी लोग फ्रॉड मैसेजेस भेजना शुरू करते हैं एंड इट गोज वायरल। ओके, सो मेक श्योर कि, फॉर एग्जाम्पल, बीच में एक मैसेज आ रहा था बीएससी से, जो एक्चुअली बीएससी का नहीं था, तो उसमें बी कैपिटल था, एस छोटा था, ई बड़ा था, तो उसमें वो बीएससी का एक्चुअली आ रहा था कि बीएससी से मैसेज है, पर वो बीएससी का मैसेज नहीं था। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू नो, वो जो भी ऐसे मैसेजेस आए, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस वाया एनी सोशल मीडिया इज गुड, बट बोलते हैं ना कि हर चीज की अति बुरी है। Okay, too much of everything is bad, so too much of information is also bad. So you have to filter out that information and then look at the information which is authentic. And how do I get that, how do I check the authenticity of the information? All the messages are always there on your, this is a screenshot of the various types of Ponzi messages that come. Okay, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। सो हाउ डू आई फिल्टर आउट? तो ऐसे बीएससी के और सेबी के वेबसाइट पे हमेशा आपको एक क्वेश्चन आता है। ओके, लाइक देयर समथिंग लाइक, जैसे आपको ये बीएससी के वेबसाइट पे ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको रीड करना है कि ये जेन्युइन है या नहीं। अगर वो वेबसाइट पे भी है और आपको एसएमएस आ रहा है, तो वो जेन्युइन है। Okay, so always verify it from there, always authenticate anything from the website of SEBI or of the exchange. अगर वो आपको मैसेज आ रहा है, उनके वेबसाइट पे भी होगा। Okay, so you have to always verify it. Do not just fall prey to any news that comes in. Okay, बिसाइड्स दैट, आपको अगर आप बीएससी या सेबी के वेबसाइट पे कभी आपको टाइम मिले, तो हमेशा तो जाके एक बार जस्ट स्क्रॉल इन थ्रू। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनीज लिस्टेड है। ओके, कौन सी कंपनीज फिलहाल ट्रेडिंग से सस्पेंडेड है, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडर्स, अभी प्रमोटर्स की प्लेज कहाँ पर है। ओके, विच आर द कंपनीज विच हैव इशूड द आईपीओज। ओके, कौन सी अवेलेबल है ट्रेड के लिए। तो आपको ये सब कंपनीज का पूरा मिलेगा। बिसाइड्स दैट, अगर आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे। ओके, कि आपका केवाईसी अपडेशन कर दीजिए, या आपके पैन कार्ड को लिंक कर दीजिए, या ये प्रपोजल है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूज ऑल्सो विच कीप्स कमिंग। Once you're aware of this, you are said to be an aware investor. So always be an aware investor for you to make really good decisions. ओके, उसके अलावा आपको बहुत सारे टर्मिनल्स पे कंप्लायंसेस, कौन से रजिस्टर डीलर्स ने कौन से कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं, कौन से कंप्लायंसेस नहीं फॉलो किए हैं, ऑल दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी इनटू योर
account. Okay, so ये सब चीजें आपको देखनी है. The whole purpose of BSE as a stock exchange is to strengthen the market regulation and to list the securities of the companies to protect the integrity of the security market. And therefore, we have to exert proper precaution for doing this. Okay. Now, the last thing that I don't know how much time do we have, but now we are just going to what are the redressal procedures. Okay. So be aware of your rights and responsibilities. Take the due diligence. Don't get into, as I told you, don't get into impulsive buying and selling. Okay. Only deal with registered intermediaries and do not and caution against unsolicited investment tips. These are the basic gist of whatever we have discussed till now. Now, कभी कुछ ऐसा हो जाता है where you have to redress, where आपको ये चीज का कंप्लेन करना है, तो आप कैसे करें? So you have a app, SEBI का app होता है. Besides, there is scores, that is SEBI complaints redressal system. Okay. Now ये scores से क्या होता है कि आप, ये बहुत investor friendly है और वो एक वेबसाइट पे आप जाके उसके you can put in your complaint कि क्या हुआ, कैसे हुआ, and what is the, आपको immediately एक complaint number आएगा and this will be settled in due course. Okay, you can do online through the app. Okay, both through iOS as well as Android platform. So it's very easy to now do that. आपको physically जाने की भी जरूरत नहीं है. Besides that, आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हो, टोल फ्री हेल्पलाइन एक्सेस कर सकते हो. कुछ भी अगर आपको कंप्लेन है, कुछ भी आपको अगर पूछना है, you can always use these tools to ask SEBI करके उनका है email. You can always email them and ask them any queries. Okay, you can visit their website or you can also visit the investor protection website, particularly which is investor.sebi.gov.in. Okay. Next we have, how much time do we have, ma'am? Rupa ma'am, how much time do we have? Should we take the Q&A or should we continue with the stock exchange? All right. So we are just going to just rush through the process. Okay, what are the modes of placing orders to trade? First, you visit the broker's office. You can trade via a phone call also. आप अपने broker को email भी कर सकते हो. You can trade via the website also, and as I told you, you can trade via your app also. Okay. And I also told you what's a contract note. What does it contain? It contains the date, it contains the time, the price, the quantity, your trade ID, and the various charges that are associated with it. Okay. So as I told you, within 24 hours, you will get a e-contract note. अगर आपको फिर भी अगर e-contract note नहीं जमता है, those who are little elderly can also opt for a physical contract note. Okay. As I told you, there are two segments, intraday and you have your delivery. So cash segment में आपको T+2 days पे delivery आती है. From today, there is also T+1 day पे delivery का segment, which we will discuss maybe in the next session. Okay. In the derivative segment, आपको T+1 और या before that में आपका delivery trade हो जाता है. Always remember all your transactions should be through cash only. Do not should be through bank account only. Don't use cash for any transaction. The exchange does not allow any cash transactions. So all your transactions have to be done through check, NEFT or RTGS only. Okay. Do not use cash transactions. Otherwise, it will become very difficult to settle. Okay. And always the accounts have to be settled within 24 hours of your payout date. And every buy sell has to have a counterparty guarantee. Okay. So these are the basics of trading. Due to paucity of time, we have to stop here. If there are any questions, I can take it up.
Do we have it? Okay. I'll have to ask the team if it is allowed.